अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू प्लान नॉलेज। आज हम अपने MCM301 का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स व्हेन द मैसेज इज, तो ये बी है, क्लियर। ठीक है, एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर मस्ट बी, तो ये बी है, असर्टिव। गुड कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन, सी है, बोथ सेंडर एंड रिसीवर। रिमूविंग नॉइस मीन्स बी, मिनिमाइजिंग डिस्टर्बेंस। द बेस्ट वे टू इम्प्रूव लिसनिंग इज़ टू, तो ये सी है, गिव फुल अटेंशन। फीडबैक हेल्प्स द सेंडर टू नाउ, तो ये ए है, इफ मैसेज वाज अंडरस्टूड। एम्पथी मीन्स, तो ये बी है, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स। गुड कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, तो बी है, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। बेस्ट टोन फॉर कम्युनिकेशन, तो ये बी है हमारे पास, असर्टिव। कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स थ्रो, तो ये हमारे पास ए है, यानी प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इंटरनल कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन, तो बी हमारे पास, डिफरेंट कल्चर और मेजर बैरियर टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इज़, तो ये हमारे पास बी है, स्टीरियोटाइप। ठीक है, कल्चर इज़, तो ये हमारे पास बी है, लर्नड। नॉन वर्बल साइंस वेरी अक्रॉस कल्चर मेकिंग दैम, तो ये बी हमारे पास, कन्फ्यूजिंग समटाइम्स। एंथनोसेंट्रिम्स मीन्स, हमारे पास बी है, बिलीविंग योर कल्चर इज सुपीरियर सुपीरियर। ठीक है, और कल्चर विद स्ट्रिक्ट रूल्स इज कॉल्ड, बी है हमारे पास, राइट कल्चर। एग्जाम्पल ऑफ कल्चर डिफरेंस, तो बी है हमारे पास, डिफरेंट क्रिएटिंग स्टाइल्स। लैंग्वेज डिफरेंस क्रिएट्स, ये बी है, सिमेट्रिक बैरियर्स। इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन इम्प्रूव थ्रो, तो ये बी है हमारे पास, ओपन्स कल्चर शॉक अकर व्हेन, ये बी है, यू फेस आ न्यू कल्चर। नेक्स्ट नंबर 13 है, persuasion मीन्स, तो इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड्स एंड एक्शंस। अरिस्टोटल्स मोड्स ऑफ persuasion includes, तो ये हमारे पास, लोगोस, एथोस एंड पैथोस। एथोस अपील्स टू, तो ये सी हमारे पास, क्रेडिबिलिटी। पैथोस किधर गया, ऊपर चला जाता है। पैथोस अपील्स, तो ये ए है, इमोशंस। और लोगोस अपील्स टू, तो ये हमारे पास ए है, फैक्ट्स एंड रीजनिंग। persuasive message must be to clear and logic. A persuasive speaker must be credible. Emotional appeal is used to, तो ये भी हमारे पास, connect with feelings. Too much emotional appeal becomes, तो भी है, manipulative. persuasive helps in, तो ये हमारे पास लीडरशिप है। 14 आ गया, a group consists of, तो ये बी है, टू और मोर पीपल। ग्रुप कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव फॉर, तो बी है, टीम डिसीजन। ग्रुप इंक्रीज, तो ए है, डिवर्सिटी ऑफ आइडियाज। अ ग्रुप लीडर मस्ट बी, तो ये सी है, सुपरेटिव एंड एक्टिव। ग्रुप थिंग अकर्स व्हेन बी एवरीवन एग्रीज ब्लाइंडली। स्मॉल ग्रुप्स अलो, तो ये भी है हमारे पास, मोर इंटरेक्शन। कम्युनिटीज़ आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये भी है हमारे पास, ग्रुप कम्युनिकेशन। डिसफंक्शनल ग्रुप शोज, तो ये भी है हमारे पास, कॉन्फ्लिक्ट। अ गुड ग्रुप मेंबर मस्ट, तो ये भी है, कॉपरेट। ग्रुप कम्युनिकेशन रिक्वायर्स डी ऑल ऑफ दिस इन लिसनिंग, रिस्पेक्ट, शेयरिंग आइडियाज। 15 आ गया, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन अकर्स इन, तो अभी हमारे पास, ऑफिस एंड वर्क प्लेस। अपवर्ड कम्युनिकेशन फॉलोज फ्रॉम, तो ये भी है हमारे पास, बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो अपवर्ड जो होती है हमारे पास, ठीक है, तो वो नीचे से ऊपर जाती है। डाउनवर्ड जो होती है वो बॉटम से टॉप से बॉटम आती है। ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, तो ये भी है, ऑर्डर्स फ्रॉम मैनेजर्स। ठीक है, अब देखिए, और जो मैनेजर्स के लिए ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है ना, ये वो चीज़ आ गई, मैनेजर्स को ऑर्डर मिलते हैं और वो एम्प्लॉयज़ को देते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अकर्स, ठीक है, तो ये हमारे पास ए है, बिटवीन सीईओ एंड वर्कर्स। ग्राफिंग कम्युनिकेशन इज ग्राफिंग कम्युनिकेशन इज, तो ये भी है, इनफॉर्मल। ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड हैवीली ऑन, तो अभी हमारे पास, कम्युनिकेशन मेमोज एंड रिपोर्ट्स आर पार्ट ऑफ,
तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, effective workplace communication increase, तो बी है प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज, बी है हमारे पास शेयर्ड वैल्यूज, द बिगेस्ट बैरियर इन ऑर्गेनाइजेशनल इज, तो ये भी है हमारे पास पुअर फीडबैक, द बॉडी ऑफ अ स्पीच मेनली इंक्लूड्स ए स्पॉटिंग पॉइंट्स, द की पर्पस ऑफ द बॉडी इज to explain and support the main idea. Well organized speech body helps to audience sorry okay, follow the message easily. Spotting points in the body must be see logical and connected. The speaker's goal in the body is to, तो ये भी हमारे पास reinforce the central idea. Audience analyze helps in playing the, तो ये हमारे पास delivery style. Audience related factors includes age, education, gender. The body typically contains B 2 to 5 main points. Each main points should be spotted with evidence and examples. Smooth transition in the body help a clarity यानी कि क्लियर होना. Poorly structured body leads to, तो बी है वीक मैसेज डिलीवरी. लॉजिकल ऑर्डर कैन बी, ये डी है हमारे पास ऑल ऑफ देम, all of above. Chronological order arrange ideas by, तो सी है टाइम सीक्वेंस. स्पेशल ऑर्डर और अरेंज पॉइंट्स बाय, तो ये सी है हमारे पास लोकेशन और डायरेक्शन. टॉपिकल ऑर्डर अरेंज पॉइंट्स बाय, तो ये हमारे पास है हमारा ए यानी टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स. द बॉडी मस्ट रिफ्लेक्ट, तो ये हमारे पास है the purpose of the speech. Supporting material includes the example, all of the above statistics, examples and testimony. The body of a speech is usually, तो ये हमारे पास the longest part. A good body helps a speaker to, ये देखिए हमारे पास all of the above, stay organized, increase clarity, increase credibility. Effective body organization increase audience, ये हमारे पास सी है अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 17 है. Which delivery method involves reading a written text word for word, तो ये भी है हमारे पास manuscript. A major disadvantage of manuscript speaking is, तो ये भी है minimal eye contact. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट डिलीवरी इज़ मोस्ट यूजफुल व्हेन एक्यूरेसी इज़ क्रूशियल. मेमोराइज्ड डिलीवरी मीन्स, तो बी हमारे पास स्पीकिंग विद आउट नोट्स आफ्टर मेमोराइजिंग. अ मेजर रिस्क इन मेमोराइज्ड डिलीवरी इज़, ये भी है हमारे पास फॉरगेटिंग लाइन्स. इम्प्रोव्ड स्पीकिंग रिक्वायर्ड्स, तो बी है नॉन प्रिपरेशन. Improved speaking is usually done in, तो ये भी है emergency और sudden situations. Extemporaneous delivery means we speaking from brief notes. Extemporaneous delivery style is natural and conventional. Which mode of delivery gives the most flexibility, तो ये सी हमारे पास extemophones. Lesson number 18 है. Which element of order delivery refers to the speed of speaking, तो भी हमारे पास rate. Pitch is defined as the, तो highness or lowness of voice. Volume refers to the, तो loudness. A well modulated voice means balanced variations in pitch and tone. Articulation refers to correct production of sounds. Pronunciation deals with the correct way of saying words. A mellow voice is described as, तो बी हमारे पास pleasant and soft. Pause in a speech help the speaker to, तो सी हमारे पास emphasize important points. Good delivery should match the, तो ये भी है हमारे पास मैसेज. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स
D. In all of the above. 99. A persuasive speech focus on. D. All of the above. A speech that tries to change attitude is based on. B. Value the speech that argue what should or should not be done concerns. C. A policy which organizational pattern present a problem first. B. हमारे पास problem solution which pattern is used when immediate action is required. B. Motivated sequence. The first step in the motivated sequence is B. Attention. The step need in motivated sequence identifies B. The problem. Visualization in motivated sequence helps audience B यानी कि इमेजिंग आउटकम्स Testimonial speeches includes तो डी है हमारे पास all of the above. A speech of introduction aims to तो be welcome and build credibility. Next number 20. The main purpose of a question answer section is to तो भी हमारे पास clarify information. One of the best ways to prepare for question answer is तो भी है anticipating audience queries. A speaker should always listen to the full questions. A. They avoid misunderstanding. Common concerns in a question answer sections includes because time and impact. If a question is unclear, the speaker should ask for clarification. A well prepared speaker reads rehearses so a possible answer. Speakers confidence in question answer comes from rehearsal and preparation. When answering questions, the speaker should be calm and respectful. If the speaker does not know the answer, honestly admit it. Handling objection requires all of the above. Exit 21. When responding to questions, a speaker should primarily be calm and respectful. A hostile question is usually asked to challenge or attack the speaker. When faced with a when faced with a hostile question, the speaker should respond politely. A leading question attempts to तो हमारे पास ए है suggest an answer. A loaded question contains B. hidden negative assumptions. Classification questions help the audience to understand the idea better. If the speaker cannot answer a question, they should admit honestly. Repeating the questions helps ensure everyone hears it. If a question is unclear, the speaker must ask for clarification. A speaker should never respond with anger. 22 again the setting in a presentation is improved mainly because it affects the audience frame of mind. A room that is dark, covered, crowded or stuffy negatively affects which component of the setting. Be a physiological. When a room conveys a message through its arrangement, this related to the dash factor. Be perceptual. The perceptual should ask what does this room say about me, under which consideration. Perceptual. A distracting environment makes it difficult for a speaker to maintain concentration. A setting is most effective when it is comfortable and suited to the purpose. For a comfortable setting, the audience must be able to see, hear, and sit comfortably. Audience size, composition, workspace, and interaction relate to dash setting or considerations. The U formation setting style is particularly good for lively group interaction. Treats style settings is least comfortable for presentations more than 1 hour.
ठीक है, हमारा सारा लेक्चर क्लियर हो जाए, 11 से 22 तक लेक्चर वगैरह सारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।